फार्मिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग. गॉट इट. इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग. इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. in the field of manufacturing, in the field of transportation, in the field of manufacturing, in the field of transportation, clear, etc. There can be a lot of things that are associated with this process of industrial revolution in the field of farming, technology, manufacturing, transportation, etc. Okay, through the through the middle of through the lastly we will write here the third part is what through the mid of 18th century and 19th century. Through the mid of 18th century and 19th century. And this process is still continuing. This process is still continuing. It never stopped. Industrial revolution never stopped. This process is still continuing. Got it? But this is not the complete definition. I will discuss a few more things here. We are saying what? That it is a name given to the enormous changes. I have written here what? Enormous changes that took place in the field of farming activities, technology, manufacturing, transportation, etc. in the 18th century and 19th century. Now, what I mean to say here is that, okay, this industrial revolution, we are using two words here. One word is what? Industrial, and the second is word is what? Revolution. So, industrial simply means what? If you are using the word industrial, it means it has something to do with business of manufacturing products. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से कुछ तो लेना देना है ना, अगर आप इंडस्ट्रियल वर्ड यूज कर रहे हो, राइट. सो इंडस्ट्रियल, द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्ड सिंपली मीन्स व्हाट? दैट इट हैज टू डू समथिंग or it is related to, it has to do something or it is related to, or it is related to, it has to do something or it is related to the business of manufacturing products. It is related to the business of manufacturing products. ये products manufacturing करने के तरीके से जुड़ा हुआ है. It is related to the business of manufacturing products. Clear? This is one thing. And how the business of manufacturing products changed as a result. So we can simply say here is that, देखो, prior to industrial revolution, production was carried out in the homes of people. Obviously, there was some manufacturing activity, but the manufacturing was done in your homes, in small petty shops, like we today see in the villages or the smaller towns. Clear? And there was no difference between the dwelling place and the workplace. People living in the same place, and that is also their work area. That is what? The system of production is at very low level. This is the kind of domestic production, and production is a very small or low level. And when such kind of production is done, this is what? Labor intensive. ये हमेशा क्या होगा? Labor intensive. Okay? It means yes, this might be possible that the machines are being used, but what is absent here? Factory model is absent. No factories were there. Okay? So prior to industrial revolution, the picture was like this. Clear? But when industrial revolution will come, what will happen? Factory system will appear. There will be a big campus. There are big factories installed in that campus. Okay? Hundreds of people are working in those factories, and you will find that, okay, very often the industrialists will purchase new machines, will bring new machines and install in their factories. And when new machines will be installed, what they will do? They will lay off their employees. Machine आ गया तो employee को क्या कर देना है? Lay off कर देना है. Okay. It means that this was the transition. We were moving from a labor intensive structure to a machine based framework or the structure. This was the change in the manufacturing system. So when we use this word industrial, what is the meaning of this industrial? Do you understand? What is the meaning of this industrial? Okay. इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पहली बार शुरू हुई हैं.
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पहले से होती आई, बट वो लोअर लेवल पे है, स्मॉल स्केल पे है. मशीन्स आर ऑल्सो बीइंग यूज, बट दीज मशीन्स आर स्मॉलर मशीन्स. जैसे मान लो इन इंडिया यू आर यूजिंग चरखा टू वीव कॉटन, तो चरखा भी तो मशीन है. गॉट इट? ओके. So in this way, machines were being used, but they were at a lower level. So what we see here, that this is a transition from one system to another system, right? It was a transition from one system to another system. Okay. So prior to the industrial revolution and during industrial revolution, what was the major difference? Prior to the industrial revolution and during industrial revolution, what was the major difference? This we need to know. Again, the concepts that you will learn in capitalism, socialism, you will again use these concepts in the essays. इसको essay के लिए भी ध्यान रखना है. Okay, you are going to learn a lot in this chapter. So prior to industrialization, write this point one. Okay, production was carried out, or manufacturing was carried out at a small scale or lower level or by domestic methods. Prior to industrial revolution, production was carried out at small scale, lower level, or okay, domestic methods. Okay, domestic methods. Right. Next point. Use of machines was very limited. Use of machines were very limited. Use of machines were very limited. Okay. Right. Third point. Use of machines was very much limited. Third point is production was carried out in homes or houses or small shops. Production was carried out in houses or small shops. Production was carried out in houses or small shop. Right? Production was carried out in houses or small shop. It means dwelling places plus, okay, you can say that manufacturing centers both were the same. And it happens at the initial level. For example, I am teaching you. I have now my own platform. I'm working also somewhere else. But this platform I've started, this platform is not having a commercial building. I am working from my home. Got it? And this is what? The initial level of the business. Got it? So this is always at the initial level where your dwelling places and your working area both will be the same. Okay? But what will happen? When you will grow further, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी. Okay, with your capacity, when that will increase, both things will be separated. So this is at the initial level. And what will happen here? Write this during industrial revolution. Write this factory system. Factory system. Use of big machines. यहाँ लिख लेना labor intensive. Prior to industrialization, the production was carried out and it was labor intensive. And factory system is what? Machine intensive. Factory system. Big machines, big factories, big campuses. Factory system during industrial revolution. Big machines, big factories, big campuses. And here what we see, that the manufacturing unit and dwelling place both are separated. Both are separated. और एक और नया चीज देखने को मिलेगा. Where factories will be installed, the workers will come and will settle around these factories. So new habitations will develop or not. New urban centers will be developed or not. New industrial towns will emerge or not. All this will happen. So right here that, okay, factory, manufacturing unit and dwelling place both are separated. Manufacturing unit and dwelling place both are separated. Manufacturing unit and dwelling places both are separated. And write one more point, that new habitations of workers, new habitations for workers will develop. As a result, new habitation of workers will develop. As a result, new habitation of workers will develop as a result. Right? Emergence of industrial towns and cities as a result. Emergence of industrial towns and cities as a result. Emergence of industrial towns and cities as a result. Got it? This is one word. So now do you understand the meaning of industrial? Industrial का मतलब आपने समझा? Now, revolution, what does it mean? Revolution simply means anything that is capable of bringing radical changes. And how can you understand this? That कोई भी चीज जो मतलब
आमूलचूल परिवर्तन, radical changes लाए. It means at first instance what will think, पहली दफा आपको क्या लगेगा कि इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इससे क्या अफेक्ट होने जा रहा है, सोशल एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द पीपल. बट इट्स इम्पैक्ट इज वाइडर देन दैट. इससे ज्यादा इसका इम्पैक्ट है. सोशल और वर्किंग कंडीशन के अलावा it will also have impact on the social and cultural lives of the people, plus it will have its impact on the political system, it will have its impact on the development of all the events that are followed after the industrial revolution. ये सब कुछ बदल देगा. New tendencies like colonialism, okay, will become more intensified as a result. Imperialism, okay, ये और ज्यादा promote होगा, right? Wars will be promoted as a result. It means this single event did what? It had greater impact on all aspects of life. Clear? And this was done during a short period of time. बहुत कम समय में हुआ. By this industrial revolution, Britain will emerge as one of the most powerful nations of Europe. Clear? Balance of power will be concentrated in the hands of Britain. Britain will be involved in doing business. Britain will not interfere in the local politics of the continent, but still Britain was one of the most powerful country in the world. So is industrial revolution capable of changing the BOP? Yes, it will change the balance of power. Balance of power will come in the favor of Britain. And there are so many events here. So revolution simply means what? Okay, that if within a short span of time, what we see that radical changes are introduced. Changes in all spheres of life are introduced. Or you can say that the impact is widespread, जिसका परिणाम प्रभाव बहुत ज्यादा हो. ठीक है, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा ना हो जो उससे अनटच्ड हो. अगर ऐसा कोई इवेंट है, दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. That is capable of bringing political changes, economic changes, social changes, cultural changes. सब कुछ जो लाए उसे ही क्या कहते हैं? Revolution. Okay. So is it proper to say it revolution? The answer is yes. That's why we have used this word revolution. So write about this. Revolution. Why we are using this? Write this. Within a short span of time. Within a short span of time, it was successful in bringing the radical changes. Within a short span of time, it was successful in bringing the radical changes. पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब मैं स्लाइड पे आपको इमेजेस दिखाऊंगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे. तो अभी मैं दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूँ, राइट? इट वाज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द radical changes, and here radical changes means the changes that will affect, the changes that will have effect on almost each and every sphere of life. The changes that will have an effect on almost each and every sphere of life. It may be political, it may be administration, it may be social life, it may be economic life, it may be global events, it may be important global events, it may be wars, it may be new ideologies. Okay, there is a lot of things that when we talk about radical change, it means the change that will have effect on almost each and every sphere of life. And this can be political, this can be administrative, this can be social, this can be economic, this can be global event, this can be wars, this can be, okay, any other event. Okay, so this is what, this is industrial revolution. It means industrial revolution was a phase of transition. ये क्या था? It was a phase of transition. और ये transition कहाँ से हो रहा था? Industrial revolution was basically a phase of transition. It was a phase of transition. और ये phase of transition कहाँ से कहाँ हो रहा था? So basically, previously, the system was what? A kind of land-based system and economy. और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? वी आर मूविंग टुवर्ड्स मनी बेस्ड सिस्टम एंड इकोनॉमी. So it was a transition, and the transition was from, write this, land based system and economy, land based system and economy, and from here we were moving towards the
point 2, from here we were moving towards, okay, the money based system and economy. Land based system or economy say we were moving towards money based system and economy. We were moving. So this was the transition from land based to money based system. Clear? Okay. Before industrial revolution, yes, please. Have any question? Obviously, this is very simple. Land based system means, okay, feudalism, importance on agriculture. There are economic activities, but still, which activity is more dominating? Agriculture is dominating. Yes, there is a commercial revolution. There is development of science and technology as a result of Renaissance and Age of Enlightenment. But that factory system was absent. वो factory system नहीं था. That was a mainly land-based system. And when factories will appear, that is what? Okay, that is called money-based system. Money-based system. अब देखो, when we are calling about money-based system, so there is an idea that is capitalism. एक idea है जिसका नाम क्या है? Capitalism. So capitalism came into existence in 15th century itself. ये कब से है? 15th century से ही. Capitalism was in existence from the 15th century itself. ठीक है? कैपिटलिज्म 15th सेंचुरी से क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नेचर बदल रहा है. फ्यूडलिज्म वाज क्रम्बलिंग, गॉट इट, एंड नाउ द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज मोर फोकस्ड, and trade and commerce will focus on what? Making profit. Capitalism, okay, is what? An economic theory which advocates what? Making more and more profits. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है. तो एग्रीकल्चर के बाद क्या हो रहा था? फ्यूडलिज्म. फर्स्ट क्लास से याद करो आप, मैंने बताया था डिजीज एंड एज ऑफ रेनेसां एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट वाला टॉपिक. व्हाट वाज हैपनिंग? द नेचर ऑफ इकोनॉमी वाज चेंजिंग. ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा था. एंड नाउ एज ऑफ डिस्कवरी में क्या हुआ? पीपल became familiar with the new sea routes. Okay, Vasco da Gama reached India 1498. 15th century ही तो है. Columbus reached America 1492. Which century is this? 1492. Okay, 15th century. So when they will reach to the, when they will discover new sea routes, what they will do? They will do trade and commerce with this newly discovered territory. Simply what they will do, they will sell their goods, they will purchase the goods from these countries. Okay, तो केवल गुड्स को सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है. इंडिया में जो ट्रेडिशनल गुड्स है वो लेके जा रहे हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन वाले बेच रहे हैं कहाँ? इंडिया में. और इस तरह के ट्रेड एंड कॉमर्स में इंडिया ब्रिटेन पे भारी पड़ता था. मेरी बात समझ गया ना? एंड दिस वाज कॉल्ड कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन. इसी को क्या कहते हैं? कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन. तो आप बताओ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन था कि नहीं? ऑब्वियसली था कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन. इसमें कोई मनी बेस्ड सिस्टम की हम बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस मनी बेस्ड सिस्टम. इस मनी बेस्ड सिस्टम के भी डिफरेंट फॉर्म है. देखो क्या है मनी बेस्ड सिस्टम में. फर्स्ट, एग्रीकल्चर. ओके, इट वाज द मेन एक्टिविटी. देयर वाज फ्यूडलिज्म. वी ऑल नो दिस. देयर वाज फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म था. एंड फ्यूडलिज्म इज व्हाट? लैंड एंड लैंड राइट्स बेस्ड सिस्टम. Land and land rights based system. Very simple. Feudalism is land and land rights based system. क्या यहाँ एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे क्राफ्ट नहीं होंगे? जरूर होंगे. एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ क्राफ्ट. इन एंशिएंट इंडिया टेक्सटाइल क्राफ्ट था, मेटल क्राफ्ट था, पॉटरी क्राफ्ट था, वुड क्राफ्ट था. तो क्या वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी ना था? हैंडीक्राफ्ट था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था. बट दीज आर व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट. तो यूरोप में भी क्या रहा होगा? एग्रीकल्चर प्लस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट. यही चीजें रही होंगी. एग्रीकल्चर प्लस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट, यही था. देयर वर स्मॉल, यू कैन से दैट. नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? रेनेसा पीरियड, द एज ऑफ रेनेसा. Age of Renaissance. I have already discussed this topic with you. 14th century to 17th century. Age of Renaissance will promote what? Use of reason. Use of reason को promote करेगा. It will promote the spirit of Renaissance man. और Renaissance man की खास बात क्या है? Questioning, asking question, use of reason. Renaissance man does what? Try to explore all the potentialities in his personality. Clear? So what will happen as a result? If age of reason is promoted as a result of Renaissance, use of reason is promoted,
and it also promoted, right, this, the spirit of Renaissance man. It will also promote the spirit of Renaissance man. Clear? So what will happen? Orthodox beliefs will be questioned. Orthodox belief will be questioned. Orthodox beliefs will be questioned, right? Now what will happen? Scientific temperament and rational outlook will be promoted. ये होगा कि नहीं? Scientific temperament and rational outlook will be promoted. Now what will happen? Scientific temperament and rational outlook will it be helpful in discovery of new technology, new scientific tools and instruments. Magnetic compass एक छोटा सा एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉब्स एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप होने लगे। मेरी बात समझ गया ना? स्टिल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिग मशीन्स। क्लियर? So this scientific temperament will be helpful, right? This in the discovery of new scientific tools and equipments. New scientific tools and equipments. This will be helpful in the discovery of new scientific tools and equipments. बहुत आसान कॉन्सेप्ट। नए साइंटिफिक टूल्स और इक्विपमेंट्स डेवलप, क्या लोगों की सोचने समझने का दायरा बढ़ेगा? हाँ। पहले लोग क्या समझते थे, ठीक है, कि this earth, okay, for example, when they look at the oceans or the seas, so they thought that, okay, at one point of time what will happen? The earth is round. So what will happen? अगर आप सी वॉयजेस करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाओगे, ठीक है? मेरी बात समझ गए? इफ इट इज राउंड इन शेप तो व्हाट विल हैपन? ठीक है, अगर सी वॉयजेस करोगे तो बहुत रिस्की है, किस दिन फिसल जाओगे ऊपर से नीचे। ओके, जैसे इंडियंस तो खैर 18 सेंचुरी तक, 19 सेंचुरी तक वी इंडियंस डिड नॉट बिलीव दैट सी वॉयज इज ओके इन सिंक विथ आवर रिलीजियस बिलीव्स। हम तो उनसे भी महान थे। हमें लगता था अगर हम समुद्र में चले गए तो समुद्र देवता नाराज हो जाएंगे। एंड इफ यू हैव जस्ट ट्रेवल्ड इन द सी एंड विल रिटर्न टू योर विलेजेस इन इंडिया, द पीपल विल कंसीडर यू आउटकास्ट, गांव से बाहर निकाल देते, तो बाहर करो, इसका धर्म भ्रष्ट हो गया। ठीक है, तो जैसी चीज इंडिया में थी तो इंडियंस पे हंसने की जरूरत नहीं है। यूरोपियंस ऐसा ही सोचते थे, ठीक है, कि अगर हमने समुद्री यात्रा की तो किसी दिन क्या करेंगे, लुढ़क जाएंगे दूसरी तरफ, दुनिया के दूसरी तरफ चले जाएंगे जहाज वहाज के साथ। ठीक है, बट व्हाट विल हैपन व्हेन यूज ऑफ रीजन विल बी प्रमोटेड, यूरोपियंस विल से दैट नो, वी विल डू व्हाट, वी विल डू सी वॉयजेस, हम समुद्री यात्राएं करेंगे, वी विल एक्सप्लोर न्यू एरियाज, हम नए एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। So what will happen? Age of exploration will start. This also I have discussed with you. Age of exploration will start. याद आया कुछ 15th century, 17th century? This is what? Age of exploration. Here what will be promoted in this age of exploration? Sea voyages will be promoted in this age of exploration. Age of exploration में क्या promote होएगा? Sea voyages को promote किया जाएगा. Sea voyages will be promoted. ठीक है, सी वॉयजेस से क्या होगा? न्यू कॉन्टिनेंट्स वेर डिस्कवर्ड, न्यू कंट्रीज, न्यू सी रूट्स वेर डिस्कवर्ड, तो आपके ट्रेड एंड कॉमर्स के प्रोस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यू विल बी एबल टू रीच टू द न्यू मार्केट्स, और नए मार्केट में जाके क्या करोगे? आपके पास जो क्राफ्ट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसी को जाके सेल करोगे। सो दिस इज ऑल्सो अ मनी बेस्ड सिस्टम, this is also a transition. What is happening here? Due to this, okay, write this, new trade relations with new countries, or you can say that new markets were discovered, new markets were discovered, नए market discover होंगे, and trade and commerce will improve, trade and commerce will improve. This all is what termed as commercial revolution. New markets and trade and commerce will improve. ये सारा कुछ क्या है? Commercial revolution. अब इसमें एक नई चीज आएगी, we will see a new thing in this commercial revolution, and the new feature, money based economy पूरे यूरोप में है, but here what we see a new feature, and this new feature is seen in Britain first. ये नया फीचर सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? ब्रिटेन फर्स्ट। इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप देयर इज कमर्शियल रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन पे भी है। ब्रिटेन दूसरे कंट्रीज से थोड़ा आगे है, ब्रिटेन के पास पहले से ही ज्यादा मार्केट्स हैं, ठीक है ना, न्यू मार्केट्स हैं इन
Asia and other places. Now in Britain, the time was 1760s. Clear? And 1760s is what? We can say simply, it was mid of 18th century. It was mid of 18th century. 1760s. It was mid of 18th century. And what happened in Britain? Factory system was introduced. What happened? Factory system of production. It was introduced. Factory system of production was introduced. It means big factories were installed. Big factories were installed. There was big campus of these factories. And in these factories, what happened? Machines were installed. Machines were installed. Okay? And with the help of these machines, now production will be done. So machines will be used for production. Big factory. So this is the factory system of production. Now machines are being used for the production. Clear? ये हो गया factory system of production. And in the initial phase, the factories that were installed in Britain were textile factories. So industrial revolution in Britain in its initial phase was टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन. यही क्वेश्चन यूपीएससी में था, ऐसे बताया हूं आपको. सो इन इनिशियल फेज यू कैन राइट हियर दैट in initial phages, okay, textile machines were used here for the production of textiles. So in initial phase, industrial revolution in Britain was what? Textile revolution. Initial phase में क्या था? Textile revolution. It was a textile revolution in its initial phase. Got it? It was a textile revolution in its initial phase. Textile revolution tha. In other countries of Europe, the previous technology, previous model was there. In Britain, there is factory system of production. So factory system of production से क्या होगा? The production will be increased manifold times. The production will be increased manifold times. कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. एंड हियर इंस्टीड ऑफ लेबर पावर, इनका कॉन्टिन्यूअस क्या किया जाएगा? ले ऑफ. न्यू मशीन्स विल कम एंड द पीपल विल गेट अनएम्प्लॉयड. लोग बेरोजगार हो जाएंगे. ठीक है ना? एंड मशीन इंटेंसिव प्रोडक्शन. तो इससे क्या होगा? मशीन इंटेंसिव प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चर्ड विल इंक्रीज मनीफोल्ड टाइम्स. एंड इन दिस सिचुएशन यू विल नीड व्हाट? अगर आप मान लो, सपोज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सपोज आई एम अ टेक्सटाइल factory owner and I have a small settlement like shop and I am making 100 shirts in one day. But if I install factory, I will be able to make 1 lakh shirts in one day. So if I will make or manufacture 1 lakh shirts, so I will need raw material. If the shirts are the cotton shirts, so I will need more cotton. And if I am manufacturing 1 lakh cotton per day, so I will have to reach to the consumers tak bhi jana hoga, okay, to sell this shirt. So in Britain, new needs were developed as a result. In Britain, what happened? This industrial revolution generated new needs. This industrial revolution generated new needs. And what is the new need? More raw material. The new need was more raw material and new market or market for the supply of manufactured goods. ब्रिटेन को ये नीड जनरेट हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ. जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बट आई एम नॉट कनेक्टेड विद द कंज्यूमर्स. नहीं कनेक्ट. सपोज दैट पहले से ही अगर मेरे यूट्यूब पे 10 लाख फॉलोअर्स होते और मैं वीडियो बना के अपने कोर्स सेल करता, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाता? ब्रिटेन की कंडीशन क्या थी? ब्रिटेन ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और पहले से ही इसके 10 लाख फॉलोअर्स थे. मतलब आप समझ गए, ब्रिटेन वाज ऑलरेडी इन इंडिया. 1600 to 1757, what East India Company was doing? East India Company was doing trade and commerce in India, and in these 150 years, East India Company has already monopolized the market of India. मार्केट को तो अपने कब्जे में ले रखा है. तो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, तो आप बताओ, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा क्या? रॉ मटेरियल के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा क्या? नहीं. This is the reason that industrial revolution became successful in Britain, and this is the reason, that's why
ब्रिटिश बिलीव दैट इंडिया वाज अ क्लासिक कॉलोनी फॉर देम। इंडिया उनके लिए क्या था? क्लासिक कॉलोनी। ये वही 10 लाख फॉलोअर्स वाला इशू है, सब्सक्राइबर आपके पहले से ही, कोर्स बिक गया। ठीक है, प्रोडक्ट चाहे जितना अच्छा हो, अगर मार्केट एक्सेस नहीं है, कंज्यूमर्स तक आपकी रीच नहीं है, तो योर बिजनेस मॉडल इज फ्लॉड। आपको क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर एक्सेस बनाना पड़ेगा, और इसमें टाइम लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना टाइम लगाया था? 150 ईयर्स कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए। सबसे बड़ी चीज होती है कंज्यूमर्स तक पहुंच। If I am making videos right now, it will take at least 1 year to reach to the consumers. If I will work in a consistent manner, consistency is needed. अगर एक दो वीडियो रोज फ्री में दूंगा ना, तब 1 year लगेगा मुझे कंज्यूमर्स तक पहुंचने में। कंपनी ने वो काम पहले से कर रखा था इंडिया। अब आप बात समझ गए। इन इंग्लैंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज व्हाट? टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन। And why industrial revolution became successful in Britain? One reason was East India Company's presence in India. East India Company presence in India, due to this, Britain could get easily the raw materials that it needed. Indigo तक चाहिए था। टेक्सटाइल को कलर कैसे करोगे? इंडिगो चाहिए ना। Everything that was needed for the British Industrial Revolution was, British Industries was present in India. रॉ मटेरियल भी इंडिया में ही था, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी इंडिया में आप सेल कर सकते हैं। गॉट इट दिस पॉइंट? कुछ कुछ आइडिया लगा आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को? लेकिन मशीन लगाना इतना आसान काम भी नहीं था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी है जॉन विलियम कार्टराइट की। वो खुद भी एक बहुत अच्छा इन्वेंटर था, और उसने जॉन विलियम कार्टराइट ने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में अपनी एक टेक्सटाइल मिल लगाई। ही सेट अप अ टेक्सटाइल मिल इन ब्रिटेन। और वो इतनी मजेदार स्टोरी है, टेक्सटाइल मिल तो इसने लगा दिया, एंड दिस पर्सन जॉन विलियम कार्टराइट वाज वेरी प्रोग्रेसिव। ठीक है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता था, टेक फ्रेंडली था। जो भी नई मशीन डिस्कवर होती थी, उसको लाके अपनी अपनी अपने कैंपस में, अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर देता था। ठीक है, अच्छा, जब भी वो कोई नई मशीन इंस्टॉल करता था, तो क्या होता था? कुछ एम्प्लॉयज की छुट्टी हो जाती थी, ले ऑफ। जब भी वो कोई नई मशीन इंस्टॉल करता था, तो कुछ एम्प्लॉयज की छुट्टी हो जाती थी। तो देखो, इसमें विलियम कार्टराइट की कोई गलती नहीं। ही इज अ प्रोग्रेसिव पर्सन, ही इज परचेजिंग मशीन्स, एंड मशीन्स विल रिप्लेस ह्यूमंस। So whenever he will bring some new machines, what will happen? Layoff. And gradually, what will happen? This will be one reason for the growing employment in that unemployment in that particular area. एक पार्टिकुलर एरिया में विलियम कार्टराइट की वजह से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अच्छा, जब लोग बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? बावले बन के सड़क पे घूमेंगे, और खूब विलियम कार्टराइट को बुरा भला कहेंगे, यार कार्टराइट बहुत बुरा आदमी है, मशीन्स ला रहा है। तो these people who were installing machines also had to face challenges. एक बार नई मशीन आई, तो विलियम कार्टराइट को पता चला, इसने भेजा अपने आदमियों को, जाओ मशीन लेके आओ, पैसा वैसा लेके भेज दिया। ठीक है, हॉर्सेस थे, कार्ट्स थे, उस पे सारे आदमी गए मशीन लाने। मशीन लेके वो आया ही नहीं, लौटे ही नहीं। विलियम कार्टराइट वेट करता रहा, फिर ढूंढने निकला कि मेरे आदमी गए कहाँ, मशीन लाने गए थे। ठीक है, तो इसके आदमी कहीं नहीं मिले, और न ही इसकी मशीन मिली। ठीक है, इसके घोड़े मिले वापस, हॉर्सेस, और उन हॉर्सेस पे एक मैसेज लिखा हुआ था। और वो मैसेज क्या था? कि अब अपने आदमियों की तलाश मत करो, अब अपने मशीन की तलाश मत करो, वो नहीं मिलेंगे। तुम्हारा मशीन भी हमने रख लिया, तुम्हारे आदमी भी हमने रख लिए, और आगे से अगर तुमने कोई भी नई मशीन लगाई, तो तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगा देंगे। तो रास्ता इतना आसान नहीं होता है। मेरी बात समझ गया ना? इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू पाथ, द जर्नी इज नॉट इजी। So these people had to face a lot of challenges also, because it was replacing labor power. लोगों को समझने में टाइम लगेगा, किससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है। द कॉमनर्स आर नॉट रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है ना? तो ये चीजें हो रही थी ब्रिटेन में। ओके, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। द सेम प्रोसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in Britain. Clear? It started in Britain. And what was the time period? In the mid of 18th century. It started in Britain. Okay, right, next point. In the mid of 18th century. अब इसमें देखो core points क्या है। ठीक है,
In the mid of 18th century, 1760s, it started in Britain. Second point, it was textile revolution in the beginning. It was textile revolution in the beginning. These are the most important points that you should know. Textile revolution in the beginning. Third point is what? Read this. Industrial revolution in Britain, and read this, establishment of British power in India. What was the relation between these two processes? What was the relation between these two processes? दोनों में क्या relation था? This was the UPSC mains question this year. UPSC mains question 2024. Industrial revolution in Britain and okay, establishment of British power in India. ये कब है? 1760s. And establishment of British power 1757. That is Battle of Plassey. 1764. Battle of Buxar. अगर हम इसको सिंपली कहें तो दिस इज ऑल्सो व्हाट 1760s. बोथ आर साइमल्टेनियस. दोनों प्रोसेस क्या है? बोथ आर साइमल्टेनियस इन नेचर. दोनों साथ साथ चलने वाला प्रोसेस है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक. यूट्यूब पे एक वीडियो है, हाउ ईआईसी लूटेड ओके इंडिया, उसमें भी ये एस्पेक्ट है, यूट्यूब पे डला होगा, देख लेना. तो 1760s साइमल्टेनियस, बोथ दिस प्रोसेस आर साइमल्टेनियस इन नेचर. दोनों साइमल्टेनियस है. यानी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल किसने बनाया? इंडिया ने, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस है. ओके, इसलिए कार्ल मार्क्स लिखता है कि इंडिया वाज ब्लीडिंग एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन वाज बिकमिंग सक्सेसफुल. तो ये मेंस क्वेश्चन का आपके जीएस हर बैच में जो मैंने पढ़ाया है वहाँ ये अप्रोच मैंने डिस्कस किया है सारे बैचेस में वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन वेयर द टू डिसिप्लिन्स इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री बोथ आर कनेक्टेड. दोनों कनेक्ट हो रहा है. तो राइट दिस ओके, दैट एक स्टेटमेंट लिख लो कार्ल मार्क्स का. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, बट आपके नोट्स में रहेगा तो आप रिवाइज करते समय थोड़े कंफर्टेबल रहोगे. राइट दिस कार्ल मार्क्स स्टेटमेंट दैट इंडिया वाज ब्लीडिंग एंड industrial revolution in Britain was becoming successful. India was bleeding and industrial revolution in Britain was becoming successful. India was bleeding and industrial revolution in Britain was becoming successful. Got it? India was bleeding and industrial revolution. Right, next point. Okay, machines replaced humans. This is the third feature. Machines replaced humans. Machines replaced humans. Clear? Right, next point. Machines replaced humans. Right, next point. Okay. Migration towards cities and development of new urban centers will start. Migration towards cities and development of new urban centers will start. Migration towards cities and development of okay urban centers, industrial towns, or industrial towns will be the more appropriate word. Right, next point. The steam engine improved. Steam engine इस फेज में क्या इंपॉर्टेंट है? स्टीम इंजन, स्टीम पावर्ड बोट्स, स्टीम पावर्ड ट्रेन्स. ठीक है ना, स्टीम इंजन. राइट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रोसेस. स्टीम इंजन ओके इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रोसेस. स्टीम इंजन ने क्या किया? यहाँ एक बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ठीक है, अब जैसे देखो एक और आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताऊं. अभी भी हम टॉपिक में एंटर नहीं किया. रीजन क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कनेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को. द कॉन्सेप्ट विल नॉट बी स्टैटिक. ठीक है ना, हर क्वेश्चन में दो टॉपिक तो ला ही रहा है. मेरी बात समझ गए ना? तो थोड़ा समझना जरूरी है. और जैसे ही आप क्लास में समझने को प्रायोरिटी देते हो, आपकी बुक रीडिंग का काम क्या हो जाता है? खत्म. यू डोंट नीड टू रीड द बुक्स. तो आप बताओ, जैसे ही आप बुक रीडिंग को अवॉइड कर दिया आपने, तो आपका फोकस एरिया क्या हो गया? क्लास नोट्स प्लस अंडरस्टैंडिंग मेंस के लिए. और जब आप उस चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो मेंस में जब आप लिख रहे होगे तो टाइम कंपैरेटिवली क्या लगेगा? कम. एग्जाम में सोचोगे क्या चीज कहाँ से रिलेट करनी है, तो फिर उसमें टाइम ज्यादा लगता है. ठीक है ना, तो ये करना है. चलिए, और कभी भी मेंस के आंसर्स जो टीचर्स क्लास में दिखाते हैं, बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं, डोंट बी फ्राइटेंड बाय दीज आंसर्स. ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में लिखे गए आंसर नहीं है.
If I will give you 10 questions to write, okay, you will write excellent answers. But what about that pressure which you face in the examination? Two papers in one day, paper one, paper two, next day paper three, paper four. वहां पे बदल जाता है माहौल, ठीक है ना? तो पहले तो पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले एवरेज तरीके से। पहले ये आर्ट सीखना है, पहले ही नहीं सीखना है कि क्या होगा भाई अफलातून वाला तरीका, इंडिया का सबसे बेस्ट आंसर मेरा ही आंसर हो। नहीं, वहां अभी नहीं सोचना है। इफ विल परफॉर्म एवरेज, यू विल बी आईएएस। अच्छा, आपको प्रीलिम्स में नहीं लगता है ये बात रियलाइज होती है ना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं से अगर हमने क्वेश्चन गलत होते हैं प्रीलिम्स के, तो इवेलुएट भी आप करते हो ना कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्यों वो क्वेश्चन गलत